Mahindra XEV 9e ज़्यादा बिक रही over the BE6, including there is more demand, especially in terms of bookings and even the first month dispatches. So why is the reason? क्योंकि obviously XEV 9e is a bit more expensive over the BE6 अगर आप prices देखेंगे, and the BE6 actually has more range and performance over the XEV 9e. Well, the fact of the matter is that XEV 9e में ज़्यादा space है, ज़्यादा practical है, plus and as review showed, XEV 9e has better ride quality and is more suited, while the BE6 is really sportier, edgier and more for the younger audience. But यहाँ पे 30 लाख रुपीज़ का जो प्राइस सेगमेंट है वहाँ का बायर बेस थोड़ा डिफरेंट है. दे वॉन्ट अ बिट मोर स्पेस एंड दे वॉन्ट अ बिट मोर प्रैक्टिकलिटी, विच इज़ वाई द XEV इज सेलिंग अ बिट मोर ओवर द BE6. ऑब्वियसली अगर आप प्राइसेस देखेंगे BE6 इज़ चीपर दैन XEV. हाउएवर XEV में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, प्रैक्टिकलिटी है, कंफर्ट है ओवर द BE6 एज वी सेट इन आर फर्स्ट ड्राइव. इवन दो रेंज दोनों का थोड़ा सा फर्क है, बट XEV इज सेलिंग मोर बिकॉज इट्स अ बिट मोर प्रैक्टिकल एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंटली लुक्स बिगर दैन द स्मॉलर BE6. However, the difference is a bit minimal. और एक और चीज़ है कि nearly majority of buyers have taken the top end pack 3, which means 79 kilowatt hour battery pack and of course a lot more power and the range, which means compared to much more expensive EVs, XEV 9e and the BE6 offer way more in terms of sheer power and range. Magar interestingly, buyers have chosen the bit more space, a bit more practical over the more futuristic looking BE6.